Thank you very much, everybody, for joining me today. My guest today is somebody who played for Pakistan 164 times. He was a member of that fantastic 1999 World Cup squad that Pakistan had that nearly won the World Cup. He's a renowned coach these days, having worked for many franchises. He's a former Pakistan bowling coach. Very warm welcome to Azhar Mahmood. Azhar bhai, assalamu alaikum. Walaikum assalam, Sajid. How are you? Not too bad, Azhar bhai. I've had better days. How are you feeling today after that loss? I'm not feeling great, but like it's one of those days. India were too good today, as usual. Again, they were really good. That shows the depth and strength of their setup. Azhar bhai, लेकिन 155 for two from 29.3 overs. Mohammad Rizwan and Babar Azam at the crease. There's no way they should have been 191 all out. And क्या हुआ Azhar bhai? I think like we started really well. Normally we don't start well. Today I thought we start really well, and we were going okay. And then you mentioned, like it's a big collapse. I don't know what happened. You need to adapt the condition. Like you understand when you're playing in India, like dry conditions. Okay, ball start reversing, and there will be a spin come into play. So you need to adapt those things really quickly. I thought, like when we lost Babar Azam, after that, we went into shell. I think it's the mindset. Again, it's the mindset, it's the clarity. When you want to beat India, because they are a quality side, I think there's no weak link in their side. If you want to beat that side, you have to bring your A game. I thought we were not up to the mark at that time. We started well, but I think that's where I think it's to do with mindset or clear thinking, or we were thinking of getting more than 300 runs. So you have to assess the condition of, okay, yes, I understand that later half, condition change. It's like that कि अगर आप बात करें ना कि ये विकेट पिचेस ऐसी हैं, कंडीशन ऐसी है कि आप एक पिच पे 3 डिफरेंट टाइप की कंडीशन में मैचेस खेलते हैं. अर्ली ऑन जो है वो बॉल जो है थोड़ा स्लो साइड पे था, देन रिवर्सिंग होता है, बॉल उस तरह आता नहीं है. जब बॉल पुराना हो जाता है तो शॉट उस तरह नहीं लगते. तो बेस्ट टाइम टू बैट व्हेन यू बैटिंग फर्स्ट, आपके अर्ली ओवर्स जब बॉल नया होता है, एंड देन बॉल जो है ना ग्रिप होना शुरू हो जाता है, उस तरह शॉट नहीं लगते. एंड देन जैसे सेकेंड इनिंग स्टार्ट होती है, उस वक्त बॉल थोड़ा सा स्विंग होता है अर्ली ऑन, बिकॉज लाइट की वजह से. एंड देन अगर मॉइस्चर उसके ऊपर ज्यादा आ जाए, ड्यू ज्यादा हो जाए, तो बैटिंग के लिए बहुत अच्छा हो जाता है. तो यू हैव टू अडेप्ट दिस कंडीशन रियली क्विकली. आई थिंक इंडिया ने जो है वो कंडीशन को बहुत अच्छी तरीके से अडेप्ट किया. Azhar bhai, लेकिन देखो इफ्तिकार अहमद, शदाब खान, साउद शकील, कितने मैच ये लोग खेले या डोमेस्टिक मैचेस और इंटरनेशनल मैचेस भी खेले. आई नो साउद शकील इज न्यू टू द वन डे साइड, लेकिन these players they should know how to adjust to these conditions. Look, if you're talking about these players have experience, I don't think so. They have enough experience, international experience, especially when you're playing in front of 130,000 people and there's no Pakistani there. I'm not saying because of that thing happen, but like it's not the normal thing. Like wherever you play around the world, जहाँ पे भी आप खेलते हो तो उसमें ये होता है कि आपकी स्पोर्ट जो है 70-30 हो सकती है. It's not like 99-1. Okay, so it's like that. But this is not the excuse. But अगर आप देखें जिन लोगों की आपने बात की, रिजवान को वो बॉल अच्छा हुआ था, वो ग्रिप हुआ जो बुमराह का बॉल था. एंड देन इफ्तिखार वाज अनलकी, लाइक उसने स्वीप मारने की कोशिश की रॉन्गन पे, वो जो है ग्लव्स लग के विकेट को गया. तो वही मैं बात कर रहा हूँ कि जो है गलती मिस्टेक्स होती हैं, बिकॉज इट्स अ लॉन्ग टूर्नामेंट. इट्स नॉट के हमारा वर्ल्ड कप की कैंपेन खत्म हो गई है, बिकॉज इट्स अ लॉन्ग टूर्नामेंट. इफ वी अडेप्ट ऑन दिस कंडीशन क्वाइट अर्ली, जो हमें आगे जाके उसका फायदा होगा. Rohit Sharma, Azhar bhai, would you like to Class bowl player. to him? Would you like to bowl to him? Yeah, bowl to him. He's a class player. I always mention when he's on song, he's you will say lazy elegance. Like he got so much time. Like a bowling shot to him wasn't a good idea. There's a few concern I have in my mind. Rohit Sharma, I think, is a quality player. The way he
batted the other day, and today as well. He showed his class, how much time he has. So like you can't bowl when he's on song. You can't bowl against him. As simple as that, especially on the pitches which is really flat. As about you mentioned about concerns, the Naseem Shah, we know he was the in-form bowler. He was the on-song bowler, unfortunately injured. जो concerns are आपके Shaheen, Hassan, Haris Rauf, what are those concerns regarding the pacers and also the spinners as well? I think, yeah, let's start with pace. I think, yes, Shaheen was getting wickets with the new ball. He's always get a wicket for us. And Naseem, yeah, it's a big loss for us. But you can't say, okay, Naseem की वजह से नहीं हुआ. लेकिन जो भी bowler है, I think you see, you try to swing the ball early on. If the ball is not swinging, if there's no swing, you drag your length back. I think consistency is the bigger factor. Like if you see not this game, but if you see the game before, our consistency is not there. We're not putting the ball on 7 to 8 meter in these conditions. If you put the ball there and then don't give room to the batsman. If you bowl straight wicket to wicket, bring wicket into play, you got a better chance. It 7 to 9 meter length is the best length even in T20 cricket, T10 cricket, and one day cricket is definitely, like 4 day channel length की मैं बात कर रहा हूँ जो आप वहां पे लेंथ में आप वहां पे 4-5 बॉल करके तो देखो अगर आप देखें बुमराह when he started उसने क्या किया वहां पे बॉलिंग करता रहा एंड देन जैसे ही बॉल जो थोड़ा सा ग्रिप होना शुरू हुआ जैसे ही बॉल थोड़ा सा रिवर्स हुआ जो शदाब का जो बॉल था इट लुक लाइक अ लेग कटर बट इट वाज अ रिवर्स स्विंग उसने अपनी 6 मीटर की 7 मीटर की लेंथ पे हार्ड लेंथ किया वहां से बॉल बाहर निकला और उसका जो है ना ऑफ स्टंप उड़ गई है तो दैट्स व्हाट यू नीड टू डू लाइक पीपल वर टॉकिंग अबाउट शाहीन पेस लाइक वो नीचे आ गई है ये हो गया है हम लोग बहुत जल्दी कर लेते हैं अगर आप देखो हमारी जो बॉलिंग लाइनअप को अगर आप देखो तो आप इनके सारे मैचेस भी उठा के देख लो तो कितने मैचेस खेले में 200 मैचेस भी नहीं बनते सबके मिला के आपस में तो दे दे यंग किड मतलब जो है ना लेकिन हमारी जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो बहुत ज्यादा होती हैं या देयर इज अ कंसर्न विच इज कि आपकी लाइन लेंथ होनी चाहिए आपने आपने ओवर कैसे फिनिश करना है आपके 4 बॉल अच्छे हो गए 5 बॉल अच्छे हो गए तो एक यहाँ पे मैं डॉट बॉल करूं ना कि बाउंड्री मुझे लग जाए लास्ट बॉल ऑफ द ओवर इट्स रियली इंपॉर्टेंट हाउ यू स्टार्ट द ओवर एंड हाउ यू फिनिश द ओवर रियली वेल सो ये थोड़े से कंसर्न अगर आप देखो जो हमारे मैचेस हुए हैं उसमें बाउंड्री रेशियो जो अगर आप देखो तो फर्स्ट बॉल और लास्ट बॉल पे ज्यादा बाउंड्री रेशियो है ठीक है तो एज अ बॉलर जब आपको पहले बॉल पे बाउंड्री लग जाती है तो यू अंडर प्रेशर तो यू इन योर माइंड ओके आई एम गोना कॉन्सेंट्रेट एवरी सिंगल बॉल एज अ बॉलर लाइक आपको ये होना चाहिए कि मुझे कंसंट्रेट करना है कि बॉल बिफोर क्या हुआ है बॉल के इसके बाद वाले बॉल पे क्या होगा यू लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट ओके सो कंसंट्रेट ऑन दैट पर्टिकुलर डिलीवरी आई थिंक दैट्स वेयर वी लैकिंग इट बिकॉज बिकॉज ऑफ एक्सपेक्टेशंस के जी वो शहनशाह आएगा पहले ओवर में 2 आउट कर देगा 1 आउट कर देगा तो हो जाएगा बिकॉज दिस इज अ लॉन्ग फॉर्मेट इट्स नॉट अ T20 फॉर्मेट लाइक आप जहां पे आप गलती करते हैं तो आप गेम हार जाते हो यहाँ पे ये है कि बॉलर जो है बैट्समैन जो है वो कम बैक कर सकते हैं क्योंकि लॉन्ग फॉर्मेट है तो थोड़ा सा अपने आप को उस लिहाज से एडजस्ट करना है जैसे स्पिन डिपार्टमेंट में आपने बात की शदाब का थोड़ा सा जो उसकी जो पोजीशन है जो बॉलिंग इस वक्त वो कर रहा है ठीक है मैंने कभी भी नहीं देखा मेरी स्पोक टू शहीन आई स्पोक टू शदाब एज वेल मैंने अपनी पुरानी वीडियोस निकाली जो मेरे पास थी मैंने उनसे कंपैरिजन करके उनको वो वीडियो भी सेंड की है बिकॉज आई थिंक फॉर मी शदाब का जो था कि इंजरी के बाद जिस वक्त वो आए हैं ठीक है टाइम चेंज होता है आपका एक्शन आपकी चीजें थोड़ी सी चेंज होती हैं बट आई थिंक जब शदाब को जो मैंने देखा है जो बॉलिंग कर रहे थे ना तो उसकी जो जब एट द क्रीज जो है उनकी जो बॉडी है या आपको फ्रंट नी जो आप कहते हैं बैक नी जो है इज पॉइंटिंग टुवर्ड स्क्वायर लेग rather than फाइन लेग की तरफ जाए तो उससे क्या हो रहा है कि वो कंसिस्टेंसी नहीं आ रही वो एक बॉल मैंने कभी नहीं देखा शदाब की स्ट्रेंथ थी कंसिस्टेंसी के वो उसका बॉल एक जगह पे गिरता था और वहां उसका रोंगन इतना इफेक्टिव था अभी वो क्या हो रहा है कि गेंद आगे भी गिर रहा है पीछे भी गिर रहा है it might be a confidence issue. He's not bowling well. There might be that things because I'm not there, so I can't judge on their behalf. मुझे जो था, मैंने जो feel किया, I just sent them. I spoke to them over the messages. I said, okay, I think this word is missing. शहीन के साथ मेरी पिछले मैच से पहले बात हुई थी because उसका थोड़ा सा लोड अप में थोड़ा सा फर्क था because this
लास्ट गेम विच आई रिकॉर्डेड एंड जो मेरे पास पड़ा हुआ था, आज उसका लोड अप बेहतर था, एंड यू कैन सी इट, ही वेंट टू 85 87 पे उन्होंने आज बॉलिंग की है। तो इट्स जस्ट अ स्मॉल थिंग, आपको चेंज हो जाता है। जो जिस बंदे ने आपके साथ काम किया होता है उसको नजर आ रहा होता है कि यार आई थिंक दिस इज स्लाइटली चेंज, क्योंकि आप कंपैरिजन कर सकते हो। नए बंदे के साथ उसको नहीं पता कि शेन सेड टू मी, आई थिंक it was nothing different, and then I mentioned to him, I said load up कर। आज की जो बॉलिंग हुई उसके जो है ना, इस प्योर ऑफ रोहित शर्मा क्लास, लाइक जिस तरह वो खेला है। बट आई एम सेइंग मूविंग फॉरवर्ड, ये छोटी छोटी चीजें हैं कि कैसे आपने अपने आप को फोकस करना है, कैसे आपने अपने आप को जो है ना कंसिस्टेंसी लेके आनी है। गेम अवेयरनेस आपकी क्या है, बैटिंग करते हुए भी ओके, दिस इज द टाइम आई नीड टू टेक ए चार्ज, दिस इज द टाइम I need to suck up pressure here. Okay, okay. Rotation of the strike. Okay, if I can't play really well against this guy, तो मुझे ये जो है ना रोटेशन और स्ट्राइक करके दूसरी तरफ जाना है। ओके, XYZ अच्छा खेल रहा है, शदाब अच्छा खेल रहा है, या रिजवान अच्छा खेल रहा है, तो उसको मौका दूं। तो ये सारी चीजें गेम अवेयरनेस की चीजें, आई थिंक वी स्टिल लैक गेम अवेयरनेस। Azhar bhai, 8-0 Pakistan versus India in World Cup matches. You've been part of the World Cup squad, Azhar bhai, that's faced India. What's the issue? Mental block? Why can't Pakistan beat India in World Cups? Look, look, in recent past, Indian team is much stronger and much better than Pakistan. There's no question about that. If people say, okay, ये क्या बात कर रहा है, तो this is the reality. Okay, sometimes you have to tell the reality. Okay, now if you see, for example, now Ishan Kishan or Surya Kumar Yadav sitting on the bench, so you can see the strength. Okay, Shami is sitting on the bench. You can see the strength. It's like talking about 99 team, Bakar, Yunus, Mushtaq Ahmed, and Slim Malik Saab sitting on the bench. So you can see the depth. They are at that level right now. Yes, you're talking about World Cups. We played against them. We didn't beat them. Okay. You can say the mental block, the expectations and everything into it. But I remember when I was part of Pakistan team Champions Trophy, वहां पे भी ये बात की थी। I said कि जी stats जो हैं वो change होने के लिए जो है ना, आपका आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। इट्स अप टू अस के हाउ वी गोना गो अबाउट आवर बिजनेस। आप जब इंडिया के खिलाफ खेलते हो तो यू इमोशंस एंड एवरीथिंग, ये ओके जी, बातों से हमने नहीं करना, आपको अपनी ए गेम लेके जानी पड़ेगी। आपको अपना करना पड़ेगा कि हम इनको कैसे हरा सकते हैं, किन चीजों से, अपने बेस्ट डिसिप्लिन से। यू कांट गिव देम मौका। जहां आपने उनको मौका दिया वहां वो आपको ले जाएंगे, क्योंकि उनके स्किल सेट, उनका उनका माइंड सेट इस वक्त आपसे ऊंचा है। तो यू हैव टू मेक लेस मिस्टेक अगेंस्ट इंडिया इफ यू वांट टू बीट देम। And what about Australia next, Azhar bhai? Obviously, 6 मैच तो बाकी है, जैसे आपने कहा कि लॉन्ग टूर्नामेंट है, राउंड रॉबिन फॉर्मेट है। How do Pakistan come back from such a bad loss and against a tough side like Australia, Azhar bhai? I think if you see Australia, they lost 2 games, Pakistan won 2 games, so मतलब साइकोलॉजी आपको एडवांटेज तो होगा इस वक्त जो है ना। आप ऑस्ट्रेलिया से खेलोगे, जाहिर सी बात है वो भी हर्ट है। दे आर द साइड, उन्हें पता है कि जीतना किस तरह है, ठीक है। मोमेंटम आपका टूर्नामेंट में, मोमेंटम आप किस तरह टुवर्ड्स द एंड, जब आप जो फिनिशिंग आर्टिकल की तरफ जाते हो, तो वहां पे आपका मोमेंटम कैसा बनता है। जाहिर सी बात है पाकिस्तान, आई थिंक टू बी ऑनेस्ट, लाइक आई वाज रियली इम्प्रेस्ड विद अब्दुल्ला शफीक, मतलब ओपनिंग में। और सऊद शकील के आने से ना हमारी बैटिंग में एक डेप्थ नजर आई है। जब अगर बाबर नहीं करता, रिजवान नहीं करता, तो जिस तरह का उन्होंने 100 किया पिछले मैच में, सऊद शकील ने जो पहले मैच में आके जो इंटेंट शो किया, तो आई थिंक कि हमारी बैटिंग जो है वो फिर बेहतर करेगी, क्योंकि कंडीशन भी सूट करती है, सारा कुछ है। तो आई थिंक कि हमारी बैटिंग मतलब काफी बैलेंस लग रही है मुझे इस वक्त जो है ना। अगर मैं बाहर से देखूं तो बैलेंस है। अब व्हाट आई सेड अबाउट द बॉलिंग कंसर्न, you need to take wickets. Okay, how you gonna take wickets? It's not gonna here कि आपका स्विंग होना शुरू हो जाएगा या कुछ ऐसी चीज हो जाएगी कि हो जाएगा, लेकिन आपको अपने डिसिप्लिन से चीजों को बेहतर करना पड़ेगा, डैमेज कंट्रोल करना पड़ेगा आपको, तो फिर आप कर सकते हो। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी जहां पे आपकी ये टूर्नामेंट वही टीम जीतेगी। बैटिंग तो आप देख लें कि अभी इतने सारे रन हो चुके हैं, इतने 100 हो चुके हैं इस टूर्नामेंट में,
तो यहाँ पे वही टीम जीतेगी वर्ल्ड कप जिसकी बॉलिंग जो है वो 10 आउट करने वाली होगी। आई थिंक इंडिया की इस वक्त बॉलिंग है, अगर इस वक्त आप साउथ अफ्रीका देखें उनकी बॉलिंग भी काफी शमसी और उसके साथ जो है वो काफी तगड़ी है। ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग तगड़ी है। हमें जो है, क्योंकि पाकिस्तान की बॉलिंग हमेशा से तगड़ी होती थी, तो आई थिंक कि हमारी बॉलिंग तगड़ी है। सिर्फ हमें अपना जो है ना प्लान ऑफ एक्शन बेहतर करना है कि हम किस तरह अपने जो है, जो हमारे सोर्सेज हैं, क्योंकि अब जाहिर सी बात है, बात करें नसीब नहीं है, फलाना नहीं है, ढमकाना नहीं है, तो आपके पास बेस्ट रिसोर्सेज तो यही है। हाउ वी कैन मेक अ प्लान, हाउ कैन वी यूज अ फर्स्ट एंड अवर बैटर, कि जहां हमें अगर विकेट नहीं मिलती तो हम कंटेन करें। कैसे हम मिडल में विकेट ले सकते हैं, जैसे चैंपियंस ट्रॉफी में था, शदाब नीड्स टू कम इनटू द पार्टी। उसको उसको जो है ना वो करना पड़ेगा। बीच में हारिस रऊफ को मिडिल पीरियड में विकेट लेनी पड़ेंगी। तो ये अगर आप दो ऊपर से आउट करते हैं, आप जिस दिन शाहीन आए उसने पहले स्पेल में दो आउट कर दिए, साथ में हसन ने एक आउट कर दिया, तो यू आर इन बेटर पोजीशन। So it's we not getting the wickets and we not stopping the runs. I don't mind if you're going for 80 in 10 overs and you get 3 wickets. I don't mind that. But we are not doing that right now. So I think if we can go in that mindset, okay, either we contain or we want to take the wickets. तो भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का. Let's hope that Pakistan can turn things around after this loss today and at least qualify for the semi-finals. बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का. Thanks very much and all the best for Thank, the future. thank you. Thank you.